So now what is SVM? We already learned that something like थोड़ा सा हम लोग को SVM के बारे में पता है. It's nothing but a classifier. But एक overview ले लेते हैं. Like पूरे SVM में क्या discuss करना है. Then we will start with the next part. So what is SVM? So that is something about SVM. Normally अगर उसको तीन part में divide करें, support, then vector, then machine. So we want to like draw a vector machine which supports something. Otherwise, we want to draw vectors to support something. So let's just start it to think a support vector machine as a road machine. So what I meant to say, road machine in the sense what, which separates the left right cars, building left right side cars, buildings, and whatever the like projections or whatever the things are there. Like I say, some buildings are there, some restaurants are there. It is just used to divide everything by using the vectors, and want to create it. It will just create a road with maximum margin, so that easily we can just like drive our vehicles and whatever it is. So let's start it. What we want to learn in this road machine. Road machine in the sense I mean to say that's nothing but a support vector machine. So what is the support vector machine? How does it just separate the linear data, and how it does supports separate the non-linear data. So this is nothing but an overview. So consider this one. So what is the support vector machine classifier? So guys, I want to, this is our SVM, as we know. Right now, we know that this is our SVM, and these are nothing but in like this is the whole margin actually. Okay. So back to the ML word, those cars, buildings are nothing but in just nothing but in dots. So red dots and green dots actually. So now what about the straight? The straight becomes a dash line and solid line. What about the solid line? That solid line is nothing but in support vector machine. So we want to achieve this. Okay, we want to draw this. We want to separate our data by just developing SVM. So now let me read some more things. Like what is the margin? Margin is nothing but in perpendicular distance. There is nothing but in perpendicular distance between these 2 points. मतलब यहाँ से कोई point ले लीजिए. Okay, यहाँ से कोई point ले लीजिए और उसका इस line से एक perpendicular distance. This is not a perpendicular, but a perpendicular distance. मतलब perpendicular एक line draw करिए, 90 के angle पे एक line draw करिए. That's margin. So हो सके उतना अपने को margin maximum करना. That's the width. That's the width. That's the margin width. Okay, तो margin width मुझे maximize करना है. And this is known as actually margin. Margin means what? कोई भी point से अपना जो dash line है, dotted line है, dashed line है, उनके बीच का perpendicular distance. That's the margin. Let me read this. Support vector machine is responsible for finding a decision boundary. What is the decision boundary? That's nothing but in that dashed line. To separate the different classes to maximize the margin. Margin is nothing but in perpendicular distance between the line and those dots. Okay, ये एक overview ले रहे. Then we will just once again start the mathematical part. So now SVM in linear cases. So like we just learn a linear cases. Linear cases is nothing but in standard scenario. What does what I mean to say? Standard scenario in the sense I have a data set which can be separated into 2 parts. Okay, there is no mixed data or noisy data in that. Okay, so that's actually known as linear data set. So now, like obviously, infinite lines exist to separate the red and green dots, as we see in a previous example. So that's actually known as linear part, otherwise linear data set. So SVM needs to find the optimal line with the constraint of correctly classifying the either class. So we know that what is the optimal line? Optimal line in the sense whenever you will deal with the line, we have to just work with the W and B. So W and B must be we have to find out the best value of W and B so that the margin width will be the maximum. Okay, and we have to care about some constraints. What about the constraints? Constraints in the sense these are the conditions which we have to follow while just trying to find out W and B. So what was the condition? Condition was yi, and in the bracket yi in the bracket wx plus b greater than equals to 0. What about that y? Y is nothing but a class label. Maybe it's a +1 or -1 in the binary classifier concept, and the binary classifier case actually. Okay, so equation was something like this. So equation was yi, let us just say y, and here wx plus b, okay, greater than is equals to 0. So that's nothing but an like general equation. What about what is the value of y? Maybe it will be a 1, maybe it will be a -1. That was the general equation. In last session we concluded this equation. What about the x? These are nothing but in features. What about w and b? We have to find out this thing.
So whenever you will just find the SVM, you will just get the value of W and B. So now for the upcoming point or for the query point, just put the features value, just put the X value, just put the features value in the place of X, and W and B, which we already derived by just finding the SVM. And I put all this value, and here you have to just put the class label. So for which class level you are working, guys. So if it is greater than or equals to 0, you have to put the data, or greater than or equals to 1, not the 0 actually, greater than or equals to 1. So if that is greater than or equals to 1, you have to put that data above the SVM. Otherwise, if it is less than or equals to -1, you have to put that one in below the SVM. SVM in the sense that actually like that's actually a line. जो हम लोगों ने find out किया था, उस line के above या below कहाँ पे उस point को put करना है. So now that's that. So follow the constraint. Only look in the separate hyperplanes. What is hyperplane? We learned that also. What is hyperplane, guys? What is hyperplane? Hyperplane in the sense nothing but in separate lines. अगर वो line से line कब होगा जब आप 2D पे काम करो. If you are working with the 3D, it's nothing but an actually you can simply say a normal plane. If you are working with the 4D, then 3-dimensional plane. अगर आप 5D पे काम कर रहे हो, then 4-dimensional plane, and etc. thing. So that's something about the hyperplane. What is hyperplane? So in two-dimensional, hyperplane is nothing but a line to separate our linear data. Now consider just a linear data. We just conclude this thing also. For the 3-dimensional, it will be a plane. Okay, it will be the 2-dimensional thing to just separate the data. Okay, ये भी हम लोगों ने discuss किया था. So now अगर मैं 4-dimensional की बात करूँ, then guys this plane will be a 3-dimensional. अगर 5-dimensional की बात करें, then this plane will be of 4-dimensional, something like that. So conduct the optimization, pick up the maximize margin. So optimization के लिए हम लोग को maximize margin को maximize करना है as we learn. And what about the hyperplane? तो hyperplane भी हम लोग को discuss करते हैं. Now, so hyperplane in n dimension will be 1 minus n minus, like what about the hyperplane? Hyperplane is nothing but n minus 1 dimension. Okay, so that's in 2-dimensional. In 2-dimensional, it will be the 1-dimensional thing. In 3-dimensional, it will be the 2-dimensional thing. So that is something about the hyperplane. What is the use of hyperplane? It is just used to separate the data. But right now, still we are working in a linear cases. Still we are just consider our data. We have a data which we can actually linearly classify. Now let me just now let me just discuss about the hyperplane. So what will be the equation of the hyperplane? So guys, this is the general equation for the hyperplane, like b0 plus b1 x1 plus like b2 x2. It's not a b, but you can consider it's a b. It's a beta. Now bn xn, okay, is equals to 0. That is the equation of hyperplane. But if you are working with the 2-dimensional, now here some mix-up is there. Okay, now here if you are working with the 2-dimension, then up to this you have to consider. If you are working with the 3-dimension, then up to b3 x3 you have to consider, and something like that. Okay, so this is the equation of line. We know this. Okay, and इसको हमने general formula पे भी लिखा था. What was the general form? So the general form is wx plus b is equals to 0. What about the wx? और यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से angular बनाया था. What about the wx? It depends on a dimension. अगर आपका पास 3-dimension है, अगर आप 3-dimension पे काम कर रहे हो, अगर आपका hyperplane 3-dimensional का generate हो रहा है, so w1 x1 plus w2 x2 plus w3 x3 plus b is a constant. अगर आप line की बात कर रहे हो, so line के लिए क्या होगा? w1 x1 plus w2 x2 plus b is equals to 0. Okay, अगर आप 2D की बात कर रहे हो, then w1 x1 w2 x2 w3 plus b equals to 0, something like that. And what about the constraint? So these are the constraints. The constraints in the sense either it will be greater than 0 or it will be less than 0. मतलब जो आपको points मिलेंगे, data points आएंगे, data points के लिए either आपका value greater than 0 होगा, otherwise less than 0 होगा. What about that greater than 0 and less than 0? तो ये SVM का equation है. This is the SVM equation. Okay, तो आपका point SVM के ऊपर कभी भी नहीं होगा. मैं कौन से point की बात कर रहा हूँ? I'm just talking about these points. Okay, मैं सिर्फ इन points की बात कर रहा हूँ. Either it will be green points or it will be red points. मैं इन points की बात कर रहा हूँ. So ये SVM के ऊपर कभी भी नहीं होगी. अगर वो SVM के ऊपर है, then it is not an SVM. SVM is just used to like differentiate both the classes actually. Okay, so वो कभी भी SVM के ऊपर नहीं होंगे. So that means what? Like अगर जब मैं equation के अंदर value put करूँ, ये this is my SVM equation. Okay, this is my SVM equation. So जब मैं value मतलब like कोई भी points के लिए मैं work करूँ, तो either ये value greater than 0 होगी, otherwise this value will be less than 0. Either वो greater than 0 होगा, otherwise वो less than 0 होगा. मतलब या तो SVM से left hand side या above line or below, either above or below. That's it. So that is something about hyperplane. Now what is separating hyperplanes?
So now that is similar, actually separate hyperplanes in the sense we have three different hyperplanes considered, in which one I have to select actually. Okay, so we have to select the best one by just finding the best value of W and D. We know that actually, so let me just ignore that. So here we just consider, like here we just conclude the general equation. We know the equation, है ना? ये हम लोग को पता है. What about this one? इसकी जगह हम लोगों ने last time ऐसा कुछ लिखा था, WX plus B. ओके सो मैंने आज ये स्लाइड वन सेकेंड मतलब ये पीपीटी क्यों डेवलप किया, बिकॉज काफी सारे वेबसाइट्स में इस तरीके से इक्वेशन दिए तो कंफ्यूज ना हो. सो ये इक्वेशन हम लोगों ने इस तरीके से लिखा था, WX plus B. व्हाट अबाउट द W? इट डिपेंड्स, लाइक W एंड X उनकी वैल्यू मुझे मल्टीप्लाई करना है W और X को, बट कितने टाइम? इट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ हाइपरप्लेन. ओके 3D है तो 3 टाइम्स तक, 4D है तो 4 टाइम्स तक, इंश्योर W1 X1 plus W2 X2 plus W3 X3 onwards. And what about this Y? Y is just used to represent a class value. In short, it will be a 1 or it will be a minus 1. So that's that. Now, what about the margin? So what is the meaning of margin, guys? What is margin? Yes, anyone? Margin हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था. What is margin? Margin means what? Perpendicular distance from any point to this separator. Okay, I'm not talking about the SVM. SVM से नहीं, ये इसका separator line है. Okay, तो इसके बीच का जो distance है, हम लोगों ने ये चीज कैसे कंसीडर की? कंसीडर अगर ये इक्वेशन, ये अगर आप एसवीएम का इक्वेशन ले तो एसवीएम का इक्वेशन क्या होगा? एसवीएम का इक्वेशन कुछ ऐसे होगा, WX प्लस B इज इक्वल्स टू 0. ओके, बट मुझे ये मार्जिन मैक्सिमम करना था तो हमने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करी. मतलब ये डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, कंसीडर दिस डिस्टेंस इज 1. ओके, सो सिमिलर यहाँ पे भी 1 का ही डिस्टेंस रखेंगे, मतलब दोनों साइड सेम डिस्टेंस होगा. Then what about the equation of this dash line जो रेड साइड पे है? इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? देखो दोनों पैरेलल लाइन से, तो हम लोगों ने ऐसा रखा था कि पैरेलल है तो W और B का वैल्यू सेम होगा, सो WX plus B. बट जो सामने 0 लिखा था उसकी जगह यहाँ पे हो जाएगा माइनस, बिकॉज इट इज बिलो द SV. एंड व्हाट अबाउट दिस वन? द इक्वेशन ऑफ दिस वन विल बी WX plus B is equals to minus 1. Sorry, is equals to plus 1. This one is minus 1, this one is plus 1. So ये जो plus 1 and minus 1 वाला line है, what is that plus 1 and minus 1? It's nothing but in distance from SVM to margin line. तो ये लाइन से कोई भी डॉट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन से कोई भी डॉट का परपेंडिकुलर 90 के एंगल का डिस्टेंस, that is actually known as margin. That is actually known as margin. That is it. So now let's consider we have an hyperplane line X. So this is nothing but an X line. Okay, ये X वाली line है. Now calculate the perpendicular distance from all these 40 dots from the X. That's actually at different distances. So हम लोग यहाँ से अगर distance calculate करें हर एक का, so we will have 40 different distances. But guys, still यहाँ पे जो भी लिखा है, but we have not to and out of 40, the smallest distance it's our margin. Okay, smallest distance मतलब ये वाली चीज को margin बोला हुआ है, but ये margin consider नहीं होता. Margin will be this one. Okay, कोई भी हर एक point का margin हम लोग calculate करना होता है. So that is the margin of each and every one. बट अगर आपको ऐसा बोले कि पूरे एसवीएम का मार्जिन चाहिए तो स्मॉलेस्ट वन इज द मार्जिन. ओके, तो स्मॉलेस्ट वन दैट इज द मार्जिन. बट अगर आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट का बोले तो पर्टिकुलर पॉइंट का मार्जिन इस तरीके से कंसीडर होता है, हर एक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस डैश लाइन. सो नाउ दैट इज समथिंग अबाउट द मार्जिन. एंड नाउ लेट मी जस्ट स्टार्ट, लाइक हम लोग यहाँ तक पूरा डिस्कस कर चुके थे. नाउ लेट मी जस्ट स्टार्ट द नॉन लीनियर डेटा सेट. तो एसवीएम, दैट इज एसवीएम इन लीनियर बट नॉन सेपरेटेबल क्लासेस. नॉन सेपरेबल केसेस इन द सेंस हम लोग स्टिल लीनियर पे वर्क कर रहे हैं, बट नॉन सेपरेबल केसेस इन द सेंस आई हैव सम नॉइजी डेटा. I have some noisy data. Then guys, we have two options, otherwise we have two different way to deal with that. That the first thing is soft margin. We discussed this also. The first one is soft margin. Another one is nothing but a kernel tricks. तो आज हम लोग को kernel tricks learn करते हैं. पहले first वाला paragraph read कर लेते हैं. In a linearly separable case, SVM is trying to find out the hyperplane that is maximize the length, otherwise maximize the margin, with the conditions that the both classes are classified correctly. But in reality, in real world, data set are probably never linearly separable. So some like conditional 100% correctly classified by the hyperplane cannot be that, otherwise it will be never done. So ऐसा कुछ हमारे पास डेटा सेट ही नहीं है कि इसको आप linearly separate कर सके. Maybe there is some noise. Okay, हो सकता है, otherwise maybe we will have this type of data. Let me just go with this. So यहाँ पे ये noisy data है, just check. ये linearly separable classifier था तो I can easily draw the line over here. But here just focus on that. Here we have red point in the area of green, and this is more complicated one.
ओके यहाँ पे ज्यादा ही कुछ कॉम्प्लिकेटेड डेटा है. सो हियर दिस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड वन. सो ऐसा काफी टाइम हो सकता है. दैट इज अ नोइजी डेटा. ओके लीनियर क्लासिफायर है मेरे पास, सॉरी लीनियरली सेपरेबल डेटा सेट है, बट स्टिल सम नॉइज है मेरे पास. और दूसरी चीज हो गई कि मान लो हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है. सो like this is not a, still it is not a like good diagram. So consider this is the type of data, this type of data I have. So इस टाइप का मेरे पास कुछ डेटा है. So consider दो the yellow point है, then one some like some dark color or reddish color is there, and after that two yellow colors are there. How to separate them? I cannot draw the two SVMs. मैं इसके लिए दो SVM ड्रॉ नहीं करना चाहता और कर भी नहीं सकते because SVM must be single. अब दो मॉडल कैसे बनाओगे? Okay, we cannot draw a two models. So what to do with this one? So like ऐसे situation में क्या काम काज करें? The first solution is nothing but in soft margin. Second solution is nothing but a kernel tricks. Okay, so first one is actually soft margin. Second one is nothing but a kernel tricks. So what is the soft margin? और अब तक हम लोगों ने जो margin develop किया उसका नाम क्या था? So guys, margin दो type के होते हैं, hard margin and soft margin. So what is hard margin? Hard margin in the sense it is used to just otherwise the margin which does not allow either of the data in either of the sides. In the sense this margin, consider this is the margin line. It will not allow green on red side and red on green side. Okay, ऐसा लाइन जो एक डेटा को दूसरे क्लासेस के अंदर अलाउ नहीं करेगा. एक ऐसा मार्जिन जो एक बार उसने क्लासिफाई किया कि ओके अबव में लाइक लाइन के ऊपर या जो भी हमारा क्लासिफायर था उससे ऊपर एक्चुअली ग्रीन होंगे और बिलो साइड पे एक्चुअली रेड होंगे. तो रेड वाले को ग्रीन एरिया और ग्रीन वाले को रेड एरिया में अलाउ नहीं करते. दैट इज द हार्ड मार्जिन. That is the hard margin, but generally it is not like feasible. So another one is nothing but a soft margin. Soft margin in the sense either of the error cases is allowed. तो ये टॉपिक भी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि हम लोग को अपने कंस्ट्रेंट्स में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा परमिशन देना पड़ेगा, एंड दैट इज नथिंग बट एन एरर, वी कैन से दैट. ओके, तो थोड़ा हम लोग को एरर अलाउ करना पड़ेगा. राइट नाउ मैं मैथमेटिकल पार्ट कवर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ थ्योरेटिकल बता रहा हूँ क्या क्या चीजें डिस्कस कर रहे हैं. सो नाउ व्हाट इज सॉफ्ट मार्जिन? तो सॉफ्ट मार्जिन इन द सेंस व्हाट? Data with some noise. Okay, so this is linearly separable, this is not linearly separable. Part 1 and part 2, in short, two different examples. Okay, now just consider if I add one red point in green cluster, the data set become linear non separable anymore. So isko solve kaise kare? Then we have two options. The first option is either we can go with soft margin or we can just use kernel trick. What is soft margin? Try to find out the line to separate but tolerate one or few misclassified dots. In short, इसको भी मुझे क्लास डिवाइड कैसे करना है? Just find out this type of lines actually. Okay, इसको आप इग्नोर करें. That's that. Just ignore this. तो ऐसे तो इग्नोर नहीं कर सकते, but we have to allow some error part actually. तो हम लोग लाइन ड्रॉ करने के लिए जो कंस्ट्रेंट बना चुके थे, कंस्ट्रेंट इन द सेंस दिस इज द इक्वेशन. So constraint in the sense this is the equation, this is the constraint. Okay, तो इसमें कुछ तो आप एरर कोड लिखेंगे, मतलब ये हमने C और एप्सिलॉन एंड ऐसा कुछ हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था. So you have to just allow some error part. So that is something about the soft margin. What about the kernel trick? So now kernel trick in the sense what? अब तक हम लोगों ने जो SVM ड्रॉ किए थे वो कैसे बनाए थे? So हमारा SVM कैसे था? Our SVM is actually linear. In short, हमने लाइन ड्रॉ की थी. तो लाइन की जगह आप क्यूबिक ले सकते हो, आप पॉलिनोमियल ले सकते हैं, समथिंग लाइक दैट. मतलब आइदर आप इग्नोर करें उसको, अदरवाइज आपके SVM का इक्वेशन आपको चेंज करना पड़ेगा. So two different things are there. So kernel tricks are nothing but to find non-linear decision boundary. Decision boundary in the sense I mean to say that's SVM. Okay, what is soft margin? So two types of misclassification are tolerated by SVM under the soft margin. So soft margin भी दो तरीके से है, shown in left and shown in right. Okay, so like the dot is on wrong side of the decision boundary but on the correct side of the margin. In a similar way, the dot is on the wrong side of the decision boundary but on the wrong side of the margin, shown in right. So just consider, so यहाँ जो हमारे पास example था, just consider like अगर मैं कुछ error code भी एक बार final करूँ कि ये मेरा error code है. Error code in the sense what? Like let I just remove all this. जो slide में क्या बताया था? One minute. Yeah, fine. So now consider this is the SVM line. Okay, this is the SVM line which is the classifier actually. So रेड और ग्रीन को हमने डिवाइड किया. नाउ कंसीडर मैंने कुछ एरर अलाउ की थी, मतलब अगर ये मार्जिन लाइन से 1 पॉइंट अगर वो डिस्टेंस में है देन इट्स ओके, आई जस्ट अलाउड. मतलब 1 पॉइंट तक में एरर हो सकती है, मतलब ऐसे और भी रेड पॉइंट्स यहाँ पे आ सकते हैं.
इन अ सिमिलर वे 1 पॉइंट तक यहाँ पे कुछ ग्रीन पॉइंट्स भी आ सकते हैं, समथिंग लाइक दैट. सो व्हाट इज दैट? द डॉट इज ऑन द रॉन्ग साइड. वो एक्चुअली रॉन्ग साइड में दूसरे क्लासिफायर के अंदर ऑफ द डिसीजन बाउंड्री, बट ऑन द करेक्ट साइड ऑफ द मार्जिन. तो हमने मार्जिन वैल्यू बढ़ा दी. ओके, दैट्स अलाउड एक्चुअली, दैट्स अलाउड. So that is the first diagram. Now, what about the another? The dot is on the wrong side of the decision boundary, but on the wrong side of the margin. मतलब वो इससे भी आगे जा चुका है, इससे भी आगे जा चुका है. मतलब ये हमारा एक डिसीजन, ये हमारा एसवीएम था और हमने एक मार्जिन वैल्यू यहाँ तक कंसीडर की थी, बट उससे भी वो आगे जा चुका है. So that's the problem. So you have to work with this one. This is the soft margin problem actually. मतलब उसकी भी लिमिट से बाहर गया. In short, जितना आपने सॉफ्ट मार्जिन लेवल ज्यादा किया उतना आपको एक्चुअली एक्यूरेसी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. So that is soft margin. So now just consider we have two different things. तो पहले मैं जैसे वहां मैंने आपको मैन्युअली ड्रॉ करके दिखाया था, just check this. So this is SVM, these are the margins. Okay, these are the margins. So ये मार्जिन के यहाँ पे इस पॉइंट पे है, मतलब मार्जिन से थोड़ा, मतलब जो अपने मार्जिन डिस्कस किया था, जो टॉलरेंस लेवल था उसके नजदीक में है या उसके लेवल पे है. And this is outside the tolerance. This is outside the tolerance. So there are two different concepts. So जितना अब मार्जिन लेवल आप अपने हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, that's actually nothing but an SVM parameter tuning that is known as. So that is the value of C. You can manage the value of C to just manage the tolerance level. But जैसे आपने C का वैल्यू इंक्रीज किया guys, आपको एक्चुअली जितना भी C का वैल्यू, मतलब it depends on the C value, and जितना C का वैल्यू आप इंक्रीज डिक्रीज करोगे, you have to compromise with actually like performance of the otherwise accuracy of your SVM. Okay, so how much tolerance or soft we can give when finding the decision boundary, like when you find out the hyperparameter, otherwise hyperplane of the SVM. So guys, in scikit-learn it is known as C. Okay, the bigger C, the more penalty SVM gets. मतलब जितना C का वैल्यू ज्यादा होगा उतना आपका accuracy level down होगा. Okay, therefore we try to just find out, otherwise use the value of C as smaller as you can. Okay, but actually this is not the proper solution. Okay, आप टॉलरेंस लेवल अलाउ कर रहे हो तो नॉइजी डेटा अगर ज्यादा होगा, then जितना भी ज्यादा नॉइजी डेटा होगा गाइस, यू कैन नॉट गो विद द सॉफ्ट मार्जिन. सो सॉफ्ट मार्जिन कब यूज करना है कि अगर आपके पास नॉन लीनियर डेटा सेट, इन शॉर्ट यू कैन नॉट लाइक इजीली डिवाइड द डेटा सेट इनटू टू पार्ट्स, classify into two parts, but some like with some part or otherwise with some small noisy data actually. अगर आप उसको डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, but still you can just allow some tolerance to just divide that data into two parts. So अगर आप थोड़ा सा आपके पास noisy data है, छोटा सा C का वैल्यू लेके हम उसको मैनेज कर सकते हैं, then you have to go with the soft margin. But अगर आपके पास ऐसा डेटा है like आपको C का वैल्यू ज्यादा इंक्रीज करना पड़े, do not use the C margin. Sorry, do not use the soft margin actually. Just go with the kernel tricks. Okay, जैसे कि like इस टाइप का इंक्रीज किया, तो जैसे C का वैल्यू इंक्रीज किया, like ये इमेज एंड जैसे लोग सडनली. हेलो, वॉइस ब्रेक हो हाँ रहा जी है सर. हाँ सर, आपका वॉइस नहीं आ रहा है. ओके, राइट नाउ इज इट क्लियर? अभी आ रहा है सर? यस सर. हाँ अभी हेलो, आ रहा है. ओके. तो ये समझ में आया था डिग्री ऑफ टॉलरेंस? डिग्री ऑफ टॉलरेंस कंप्लीटली समझ में आया गाइस? यस सर. ओके, मतलब इन शॉर्ट वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन द वैल्यू ऑफ C. दैट इज सेल्फ अंडरस्टूड एक्चुअली, कि अगर आप C का वैल्यू जितना भी आप अप डाउन करोगे, अकॉर्डिंग टू दैट आप टॉलरेंस लेवल अलाउ कर रहे हो. ओके, सो दैट वी हैव टू लर्न कि जब आप SVM के साथ वर्क कर रहे हो, जैसे यहाँ पे SVC नाम की एक चीज यूज हुई है, ठीक है, हियर इट इज. सो दैट इज svm.svc. व्हाट इज दैट SVM? इट्स द मॉडल डिफाइंड इन scikit-learn. सो उसमें हम लोग काफी टाइम C का वैल्यू प्रोवाइड करते हैं. नाउ व्हाट अबाउट दिस लीनियर? सो आई वांट अ लीनियर SVM. आई वांट अ लीनियर SVM. ओके, बट लीनियर SVM में अगर आप सॉफ्ट मार्जिन यूज करना चाहते हो गाइस, जस्ट पास द वैल्यू ऑफ C. ओके, जस्ट पास द वैल्यू ऑफ C. ओके, सो आप C का वैल्यू जितना बार पास करेंगे उस हिसाब से आप सॉफ्ट मार्जिन अलाउ करते हो. बाय डिफॉल्ट इट डजंट अलाउ एनीथिंग. ओके, बाय डिफॉल्ट वो कुछ भी अलाउ नहीं करता, उसको लीनियरली डेटा सेट चाहिए, बट आप C का वैल्यू मैनेज कर सकते हो. So now that's that. Now another thing is kernel tricks. Kernel tricks कब यूज करनी चाहिए? जब हमारे पास linearly separable data set नहीं है and हम लोग soft margin भी यूज नहीं करना चाहते. Why? We do not want to use the soft margin because soft margin में issue क्या था?
व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द सॉफ्ट मार्जिन कि भाई हो सकता है कि नॉइजी डेटा मेरे पास ज्यादा है. ओके जैसे कि लाइक कंसीडर दिस टाइप ऑफ थिंग. ओके ये कुछ डेटा सेट ले लीजिए. ओके सो व्हाट वी कैन डू, मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल वगैरह कुछ भी ले लेता हूँ. जैसे मान लीजिए ये मेरा डेटा सेट है, तो मैं इसको लीनियरली सेट करना चाहूँ, जैसे डिसीजन बाउंड्री मैंने लीनियरली ली, तो यहाँ मुझे एक्चुअली टॉलरेंस लेवल सेट करना पड़ेगा. ये मेरा रेड पॉइंट एक्चुअली रॉन्ग साइड पे क्लासिफाइड था. सो अगर मैं ये वाली मार्जिन लाइन को यहाँ से पास ऑन करूँ, तो दो ग्रीन पॉइंट मतलब इन शॉर्ट, तो अभी ग्रीन पॉइंट को प्रॉब्लम आएगा, वो रॉन्गली क्लासिफाई हो जाएंगे. तो उसके लिए भी मुझे टॉलरेंस लेवल लेना पड़ेगा. इन शॉर्ट एक्यूरेसी डिक्रीज होगा, परफॉर्मेंस डिक्रीज होगा. So now let me just go with the poly. So this is the poly concept. Poly मतलब मैं मार्जिन लेवल को, ये जो लीनियर लाइन थी उसको मैं पॉलिनोमियल के हिसाब से ऐसे कुछ कंसीडर करके चलूंगा. ओके इस तरीके से कुछ कंसीडर करके चलते हैं. सो बट ऑब्वियस वहां पे कुछ एरर आ सकते हैं. तो द सॉल्यूशन ऑफ दैट वन इज एक्चुअली आरबीएफ. व्हाट इज आरबीएफ, तो वो हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं. सो आप आरबीएफ के हिसाब से भी जा सकते हो, एंड सम मोर सॉल्यूशंस आर आल्सो देयर. जस्ट कंसीडर दिस आर द आरबीएफ एक्चुअली. ओके दिस इज द आरबीएफ, रेडियल बेसिस फंक्शंस. सो नाउ गामा की वैल्यू 1 है, सो नॉर्मल आरबीएफ गामा की वैल्यू 10 रखी. तो हम लोगों को इस तरीके से सेपरेटली हर एक क्लास को उसने कवर करने की ट्राई की. दिस इज गामा इक्वल्स टू 20. तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक हो सका उतना उसने गेप नहीं रखा है. जस्ट कंसीडर ओके हो सका उतना स्मॉल क्लस्टर डेवलप करने की ट्राई की है. सो दैट इज नथिंग बट एन आरबीएफ. So that's RBF, that linear or that actually like poly, all are nothing but an actually kernel tricks. So what is that kernel trick? We have to discuss that actually, but why we have to apply the kernel tricks actually? So what is the concept behind the kernel trick? So guys, kernel trick कब apply करनी है और soft margin कब apply करना है? So it depends on a data set. So if your data set is not linearly separable, okay, then we have to choose either of the option. The easiest option is just choose a soft margin. मतलब सिर्फ सी का वैल्यू पास करे, थोड़ा एरर लाइक एक्सेप्ट करे एंड आगे बढ़ जाए. दैट इज द एक्चुअली that is the soft margin. But if you do not want to compromise with the accuracy, we have to just go with the kernel tricks. So what do we have to do in kernel tricks? So mathematically अगर internally पूरा देखें तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में कुछ एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया था. कंसिडर आई हैव रंगोली टाइप ऑफ डिजाइन. In short, green dots are when circular points are there of the yellow points. One more circle is there with the green points, but yellow circle is inside the green circle. In short, I mean to say, consider. Where is the mouse? Okay, consider this is the first circle of the red, and another circle I have of the green. So consider I have two different class of data, but ये data non-linearly actually like spreaded है, non-linearly actually distributed है. Okay, तो red नाम का red circle actually yellow circle के अंदर है. So yellow is actually not visible. Let I just draw the green one. So something like that. इस तरीके से कुछ है. Okay, तो इसको कैसे क्लासिफाई करें? So what we did, हमने इसको क्या किया था, पहले तो 2 डायमेंशनल डेटा सेट को 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट किया था. तो 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट करने के बाद 3 डायमेंशनल इन द सेंस, अब जो सेपरेबल लाइन होगी, सॉरी, अब जो उसका सेपरेटर होगा, इट विल नॉट बी ए लाइन, इट विल बी ए प्लेन. जिसको प्लेन के थ्रू हमने उसको डिवाइड किया था. मैं एक वीडियो आपको बताता हूँ, सो इट विल बी मोर क्लियर. सो 1 मिनट. So consider this is the problem. Okay, जैसे यहाँ मेरे पास कुछ blue points है and surrounding there are some yellow points. Okay, so like I want to divide them. So ऐसा actually मुझे circle बनाना है. That's actually my poly. That's actually because of my kernel. मुझे ऐसा कुछ develop करना है. How to develop this? What is the concept behind this? So just check. इन्होंने visualization काफी अच्छी तरीके से किया हुआ है. So here we have blue and red points. Whatever the color is there, but 2 classifiers, 2 different classes are there. Now just check. एक हाइपर प्लेन हमने इन शॉर्ट ये 2D को हमने 3D में कन्वर्ट किया, 2 डायमेंशनल को 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट किया. नाउ लेट मी जस्ट सेपरेट देम बाय द प्लेन. सो एक प्लेन इंट्रोड्यूस किया जिससे सेपरेट देम. इन शॉर्ट ये प्लेन के ऊपर वाले डायरेक्शन में सबके सब रेड पॉइंट्स है और बिलो डायरेक्शन में सबके सब हमारे पास ब्लू पॉइंट्स है. जस्ट चेक. नाउ जो ये प्लेन ड्रॉ हुआ था, तो जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स थे उनको हमने कट किया, ना कट करके उसको वंस अगेन प्लॉट कर दिया. सो हम लोग 2 डायमेंशनल को 3 डायमेंशनल में रखने नहीं वाले, बिकॉज हम लोग उनका डायमेंशन एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना चाहते, अदरवाइज that is a heavy process. So what was that?
आई होप आप लोग को समझ में आया होगा. Okay, so what was that actually, guys? That is actually how to deal with the non-linear data set. So अगर आपके पास non-linear data set है something like this, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, पहले उसका actually like 2 dimensional को 3 dimensional में convert करेंगे. अब 3 dimensional है, then separator होगा. In short, after that we will simply apply SVM. तो 3 dimensional पे SVM apply करेंगे, then we will just get a plane. Okay, and once again उसको 2D में convert करके अपना model develop कर लेंगे. So that's that. So that is actually हम लोग उसका transformation बोलते हैं, actually feature mapping, that is actually known as. Okay, so we will learn that also in kernel tricks. So what is kernel tricks actually? So generally non-linear data set के साथ work करने के लिए actually हम लोग को kernel tricks otherwise soft margin use करना है. So now what kernel trick does? It utilizes the existing features, apply some transformation. Transformation may be 2D to 3D, 3D to 4D, 4D to 5D. It depends. 2D to 4D also you can do, and creates a new feature. So that is actually known as feature mapping. 2-dimensional को 3-dimensional पे map करना. So that is actually known as feature mapping. And those new features are key of SVM. Okay, now those new features are the key for the SVM to find out the non-linear decision boundary. So this is the important thing. So what we have to do in a kernel trick, if you have a 2D data, then what is our first task? We have to just convert, otherwise we have to just map this 2-dimensional data into 3-dimensional. Okay, now in scikit-learn, svm.svc, where is the fine? svm.svc, like that's the function we can choose. In this function, we can just choose a particular kernel. The first one is linear or poly or RBF or sigmoid, pre-computed or something like that. That is actually or a callable our kernel transformation. हम लोग manually भी अपना user defined transformation भी रख सकते हैं. Okay, we will just learn this poly. Linear आप लोग को पता चल चुका है. Remaining are nothing but an actually mathematical things. So as per your data set आप different चीजें learn कर सकते हैं. हम लोग poly पहले discuss करेंगे. Okay, now let me just take some examples of poly and RBF. So that is the linear one. Okay, let I just remove the. Okay, so this is the linear one. The first one is nothing but a linear one. This is the polynomial and this is nothing but an RBF. But guys, ये जो देखने में easy लग रहा है, but जो हम लोगों ने यहाँ पे एक line draw किया है, जो एक SVM draw किया है और उसके जो margins draw किया है, उसके लिए सबसे पहले काम काज क्या करना पड़ेगा? We have to just go with the transformation. In short, आपको features mapping करना पड़ेगा, 2D to 3D, 3D to 4D and something like that. Okay. So now think of the polynomial kernel as a transformer or a process to generate a new features. So generate a new features in the sense, अगर आप scikit-learn use करते हो तो internally it will do, but हम लोग को mathematics थोड़ा पता होना चाहिए, interview में शायद पूछ सकते हैं. Features by applying polynomial combinations of all the existing features. So you will have some actually function or mapper. So consider I have actually x coordinate. I have x coordinate and मैं उसको actually कुछ और चीज में convert करना चाहता हूँ, then you must have some function. So k of x, तो आप कुछ functions apply करें and you will get some like different value and consider that is nothing but in y. So what is the relation between x and y? So y is nothing but in k of x. What is that k? It's a kernel function. So which function you have to choose? It depends on your data set. Okay, so it just like जैसे आप कोई भी data एक function choose करें, तो first of all we will learn this in mathematical like in session. We will just learn this function, how this function works and how internally the mapping will work actually. So now consider this is the data. Okay. Okay, now this is the data. So now मेरे पास अभी actually दो data set है, मतलब binary classified है मेरे पास. So the first thing is nothing but an actually yellow and another one is actually something like red. Okay, so guys, इसको जब मुझे divide करना होगा, so I cannot divide it by just drawing 1 or 2 SVM. What I have to do, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? I have to just draw a kernel. So how to draw a kernel? Can I just draw this type of things? मैं ऐसा कुछ draw कर सकता हूँ. So that's a poly. It's not a linear classifier, that is a polynomial classifier. But how to draw this type of thing? So first of all, let I just map this one into new features. The existing features को मैं नए features के अंदर map कर रहा हूँ. Now एक बार नए features में आप map कर दोगे, simply you can just draw the linear classifier. Okay, उसके बाद आप linear SVM भी use कर सकते हो. Okay, so I hope ये आपको समझ में आया. What I did, देखो x coordinate same था, that is existing features x. So x coordinate same था, but y coordinate is little bit of change. जैसे यहाँ पे -0.0015 था.
उसके बाद 0.0, 0.5. So these are the new features. एक बार आप न्यू फीचर्स में डिवाइड कर दीजिए, देन आफ्टर सिंपली यू कैन जस्ट डिवाइड देम बाय यूजिंग द एसवीएम. तो अगर आपका कोई प्रॉब्लम एसवीएम के लेवल का नहीं है, देन फर्स्टली उसको एसवीएम के लेवल पे लाइए, देन एसवीएम एल्गोरिथम अप्लाई करिए. दैट्स आई वांट टू से जस्ट. Okay, so right now we will not discuss this one, not this one also. So this is also the concept that is RBF. तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इसको सेपरेटली डिवाइड किया. इन शॉर्ट आप एक क्लस्टर बनाते जाइए हर एक का. सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ RBF. आप हर एक का डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर बनाते जाइए. RBF. अब क्लस्टर बनाने के लिए भी हम लोग को उसको मैपिंग करना पड़ेगा. सो दिस इज समथिंग अबाउट द RBF. इन RBF we have to just provide the value of gamma, but in actually there are actually different functions and different values we have to provide. So these values are actually known as SVM parameter tuning. That is actually known as SVM parameter tuning. We will learn that also. So that is something about the SVM. So up to this, what we learn, what is SVM? That's actually a linear classifier, nothing else. It is a linear classifier. So linear classifier I can just use with the actually linear data set only. But हो सकता है कि मेरे पास non-linear data भी हो. So what to do with the non-linear? So consider, so you have to convert that non-linear into linear by just using the feature mapping and then apply once again SVM, unshort linear classifier. So that's the concept. So non-linear data set के साथ deal करने के लिए दो चीज थी, soft margin. Another one is nothing but a kernel tricks. Okay, so now 1 minute. So that's our original slide. हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिस्कस कर चुके थे. And views on conclusion. ये सब कुछ हम लोगों ने, yeah, that's it. So that is something about the soft margin. So this is the equation for the soft margin. So we want to just minimize this because we want to just maximize the margin. Okay, अगर ये 2 upon under root of w into w, अगर आप maximize करना चाहते हो तो उसका reciprocal, उसका reverse actually आपको like minimize करना. And what about this plus c into something? That's nothing but an error. Okay, so what is that c? That's nothing but intolerance level. Okay, so what about this epsilon k? That's nothing but an actually like whatever the error you want to allow. Okay, whatever the error you want to allow for all the k in the sense all the points actually. So जैसे यहाँ पे हम लोगों ने discuss किया था, that is actually known as slack variable. Okay, that is actually known as slack variable. It is जैसे यहाँ पे मेरे पास दो unfilled points filled वाले area में है and one filled point actually unfilled area में. That is also the soft margin. Okay, इसको deal करना, then it is known as soft margin, but this is known as actually noisy data set. So now fine. So after that, what is the another challenge? ये हम लोग next session में देखेंगे. तो कुछ यहाँ से kernel tricks मुझे आपको details में बताना है, but एक बार थोड़ा सा overview ले लेते हैं. So what is the another challenge? So this is the another challenge. जैसे अभी हमने वहाँ पे भी देखा था. So how to deal with this? So इसके साथ deal करने के लिए guys हमारे पास एक option ऐसा है कि हम actually polynomial ले, linear की तरह polynomial ले. And what to do with that? अगर polynomial लेना चाहते हो, then first of all, what we have to do? You have to just apply a feature mapping. Okay, we have to just apply the feature mapping. So it is harder to deal with the one-dimensional data set. In short, one-dimensional in the sense that is not possible. ये थोड़ा tough हो जाएगा. So what I did, ये जो data set था, मेरे पास इस तरीके से जो points थे, फिर 1D था, उसको मैंने 2D में convert किया. So it will be something like this. Okay, अब मैं इसको easily इसको SVM के through, in short, मेरा linear SVM के through इसको divide कर सकता हूँ. That's that. Okay, so now this type of thing we can draw. But directly ये जो line, ये जो first figure में हम लोगों ने जो कुछ curved line develop किया, that is not possible. इस तरीके से draw करना, that is hard actually. So what we can do, इसके ऊपर कुछ एक function apply करेंगे and we will convert that one into, actually we will just do some feature mapping. So x and o, in short x and o are nothing but in two different class labels. तो उसको हम easily classify कर पाएंगे by just using a linear classifier. Okay, but what is what we have to first, what is our first task? The first task is the feature mapping. So after the feature mapping, we can just do this. So like feature mapping के लिए हमने यहाँ पे कुछ phi लिखा था. What is that phi? It's a function to just map the existing feature to the new features. Okay, existing feature को new feature में actually map करने के लिए कोई function. What is the value of that phi? So it will be something like this. Okay, and it depends on which type of, like which quadratic function you want to use. Okay, and finally we will just deal with the kernel trick. So this is the mathematical part which we will cover in the next session. Okay, but finally the conclusion is like what
what is actually how to deal with the non-linear data set. So to deal with the non-linear data set, guys, we have two options. Either we can go with the soft margin, or guys, we can just use the kernel tricks. So next lecture will be an important one, but not actually like for the machine learning perspective. But if you want to just learn some mathematical part, then the next session is important. And I will just share the link of that video. Okay, जो हम लोगों ने अभी देखा था. It's not important, just समझने के लिए था कि वो visualization कैसे हो रहा है. मतलब that's a visualization like video कि कैसे हमारे 2D को 3D में मैप करके हम लोग polynomial वगैरह कुछ flow करते हैं. So that's the mathematical part. So what we have to learn, जैसे हम लोग अगर polynomial kernel use करते हैं, then this part, this point we have to provide. अगर आप RB के use करते हो, like radial basic kernel use करते हो, guys, then we have to just provide the value of sigma. Hyperbolic tangent पे काम करते हो, then kaba and delta value have to provide. So that is actually known as SVM tuning parameter. So after that, that will be the last and next topic of the SVM tuning parameter. But in next session,